Assalamu alaikum everyone. Welcome to Cricket Clinic, a fresh episode. आपके साथ आसिफ, मुदस्सिर और साइम हाजिर हैं. This is an exciting time, for a cricket fan and a Pakistani fan. As we record this episode, the World Cup has started. The qualifier rounds have ended. In an hour's time, the Australia versus New Zealand game is going to start. And in roughly 24 hours, Pakistan is going to launch its campaign with the much anticipated game against India. Hopefully that game does take place because there's some concerns about weather. So exciting times. So इस episode में first of all हम preview करेंगे पाकिस्तान के World Cup squad को, पाकिस्तान के prospects को. We look at the key players to watch in our team, and also discuss a little bit about the best 11 for our team, and a bit about whether we want to make some changes to our batting order and the bowling order as well. So अपने panelists से मैं पूछूंगा, first of all, how do they see Pakistan? Of course, in the UAE, we were one of the favorites given our record in UAE. But here, of course, this is Australia. We now know who the teams are in our pool. Given that, West Indies hasn't qualified, we have two teams which, on paper, Pakistan should be able to beat in Zimbabwe and Netherlands. So do you think this is a golden opportunity for Pakistan? Pakistan, आप कहेंगे कि semi-finalists होना चाहिए. Where do you see Pakistan, and what do you see Pakistan's prospects? Asif, आप अगर start करें, क्या prospects देखते हैं पाकिस्तान के? Anji, I agree. It's a very positive frame of mind that we're going in with. We may talk about this later as well, but the preparation in New Zealand could not have gone better with the way that it ended. You have Shaheen Afridi back in the team. There's a little question mark about Fakhar Roshan, but we are exactly where we want to be as a team. We're in the right frame of mind. We have everything kind of falling into place. Our batting is surprisingly falling into place as well. And we have a group that there's no question about it. It is the easier group. We really have to win either against India or against South Africa. And if the India match becomes a washout, then really just the South Africa match to secure our place. And yes, that does mean we have to beat the teams that we're supposed to meet. Your Bangladesh teams, your Netherlands teams, things of that nature. And Pakistan has stumbled in the past, but the way they're playing right now, the team that they have put together, I think it would be disappointing if we did not qualify for the semifinals. Personally, I think it'd be disappointing if we did not go beyond that, because we are just starting to peak at the right time, I believe. And I think we've put the world on notice right now. So I'm actually very optimistic. I think if everything falls into place, we can get things done. We can run away with the World Cup. मुदस्सिर agree करेंगे आप इसमें? और आसिफ brought this point about New Zealand lessons. तो उससे आप अगर आप add करना चाहें कि what have we learned and what lessons have we, and how does that impact our campaign? I agree. और न्यूजीलैंड का जो फाइनल था उससे काफी फायदा हुआ कि उस मैच में हमने देखा कि ओवरऑल सीरीज में शान ने कुछ रन किए कुछ गेम्स में, मगर जो डिफरेंस था वो हैदर अली का था फाइनल में. वो थोड़ा पीछे आया, तो आई थिंक इज शूटिंग हिज क्रिकेट नंबर 5 नंबर 6 पे, और नवाज तो मैच विनर बना हुआ नंबर 4 पे. तो आई थिंक टीम की कुछ बैटिंग ऑर्डर कुछ शेप नजर आ रहा है कि अगर कोई जल्दी विकेट गिर जाती है बाबर रिजवान में से, तो शान कैन बी अ गुड बैकअप, क्योंकि फकर का भी पता नहीं है कि फिटनेस का क्या उसका सिचुएशन है, और वो वार्म अप भी नहीं खेला. तो कंसिडरिंग कि शान खेलता है अगेंस्ट इन द वर्ल्ड कप फर्स्ट गेम, तो अगर विकेट गिरती है तो यू हैव अ गुड बैकअप. और शान इंग्लैंड वाले मैच में बैटिंग अच्छी की थी. फिर आपके पास सिचुएशन के हिसाब से अगर ओवर कम रह गए, 10 ओवर रह गए, तो नवाज एंड शादाब कैन कम अप, वरना इफ्तिखार आ सकता है नंबर 4 पे.
फिर दूसरे थे कि डेथ बॉलिंग में हमें मोहम्मद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की न्यूजीलैंड में, क्योंकि हारिस रऊफ अकेला कर रहा था और बाकी सभी रन देते हैं हमारे। इवन शाहीन अभी वापस आए हैं वार्म अप में, तो अफगानिस्तान ने काफी रन किए। तो ये मसला पुराना है ये, बल्कि जो हम हारे थे सेमीफाइनल में वो 4 छक्के पड़ गए थे। तो रऊफ के अलावा लगता नहीं है कोई एक्सपर्ट है। तो वसीम नजर आया है कि ही कैन बी अ रियली गुड डेथ बॉलर with Rauf. I think those are the biggest positive from New Zealand. So we बेहतरी नजर आई है एशिया कप और न्यूजीलैंड के फाइनल में। I mean, what I would say is, the big question, Asia Cup mein, New Zealand mein, the big question, which we've all said, middle order, what is the solution there? And it's obviously not solved, but we've seen what we can be. We've seen that when Haider Ali clicks, what a huge difference it makes. We've seen that when you promote Nawaz, and hopefully they stick with that, what a difference it makes. We've seen that when Sean gets going, if you launch your middle order like this, and then you have Iftikhar as a backup to finish it off with the sixes, you have Asif, who you never know will work, not work, but when our middle order is clicking, the pressure on the openers is relieved, the pressure on the closers is relieved, the pressure on the bowlers is relieved. We are a completely different team. And we have seen that they are alive. They can actually do it. Makes all the difference in the world. Exactly. बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर एक हमें मिल जाए, बाबर या रिजवान में से अगर एक खड़ा हो जाए ना, तो आई थिंक मेरे को टीम का शेप नजर आ गया। प्रॉब्लम अब तब हो रही है जब दोनों आउट हो रहे हैं। अगर एक भी रन करेगा तो आई थिंक दे गोना क्लिक। लेकिन देखो फाइनल में दोनों आउट हुए थे, नहीं? फाइनल में रिजवान थोड़ा सा एग्जैक्टली उन दोनों के बावजूद भी कर लिया, तो दो से वैसे ही करते ही है ना। इनफैक्ट रिजवान का आउट होना जो है वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस, बिकॉज़ उसके बाद फिर हमारी रन रेट जो है वो अच्छा। इसके अंदर व्हाइल वी एग्री के रिलेटिवली थोड़ा सा हमें आसान पूल मिल गया है, बट आई थिंक वन थिंग आई वुड लाइक टू नोट इज कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की गेम वॉश आउट हो जाए और हमें 1 पॉइंट मिल जाए, it might still come down to net run rate. I mean, I'm just giving a hypothetical scenario. Okay, let's say South Africa beats both India and Pakistan, right? So then it'll come down to net run rate. अब उसमें मसला ये है कि we are playing the associate teams earlier. हमारा इंडिया के बाद फिर गेम है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, and then we have a game against Netherlands. तो I think हमें जो है net run rate के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी. It's not just about winning those games, but trying to win them with a healthy margin. Because कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि इंडिया which is playing these teams later, उसको पता हो कि यार किस मार्जिन से हमें हराना है. Then if you're playing these teams later, it becomes easier to manage the net run rate. So I think उसके अंदर हमें, जिस तरह हमने कल की गेम में देखा है, जिस तरह आयरलैंड ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, I mean it was a do or die game for them, but उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि जी हमने जीतना है, but very aggressive in the power play, और उसको बहुत जल्दी फिनिश करके अपनी नेट रन रेट के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया. इसके बारे में आप that's problem for Pakistan, because I mean, I don't mean to jump into, but what I'm saying is, no matter what the target is, we always do just enough to win, which is a problem. I could never see it, very rarely would you see Pakistan have the same approach that Ireland took yesterday. So I think that's a very kafi ahem point which you brought up, and they need to be proactive. They need to have their thinking caps on and know at the front end, we have to be aggressive. We don't just have to win just enough to scrape by and get our 2 points. Net run rate is very important, because you have to prepare yourself for the eventuality that we will not beat India or that we will not beat South Africa. And then what happens? You hope for an upset here or there, but I agree. They have to be very, very aggressive. I do think one thing that is in our favor, watching these earlier matches, is that these grounds are very large. And so a lot of these pinch hitters, aggressive hitters, are getting caught on the boundary trying to go for 6, whereas we have 2 anchors as openers, Rizwan and Babar, who play traditional classic strokes. And I think that will actually put us in better stead. They'll play their stroke play. There are huge gaps everywhere without taking as many risks. So I think that will help us, but they have to be aggressive. And I think Rizwan also runs very well. तो वो भी हमें फायदा होगा कि जो डबल्स और ट्रिपल रन लेने के जो हमारे पास है. Some teams like West Indies, for example, I mean they got found out because उनकी गेम ही है कि यार 6 हिटिंग करनी है, और उसमें अगर आप बाउंड्री पे आउट हो रहे हो, तो वो हमें आई एग्री सूट कर सकता है.
और वो जो रन रेट की ना पॉइंट, योर पॉइंट इज एक्सीलेंट, जो दूसरा पूल है ना उसमें तो मसला पड़ना ही पड़ना है, वो अभी श्रीलंका पहुंच गई है और T20 गेम एक वो वहां तो रन रेट पे ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि इतना इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। तो आई थिंक रन रेट विल प्ले अ बिग फैक्टर इन द अदर पूल। वी हैव टू कीप इट सिंपल, हमारे ये कि वी हैव टू विन आई गेस रन रेट पे, क्योंकि इट्स टू लेट नाउ टू चेंज एनीथिंग टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो पाकिस्तान का यही है कि दे हैव टू क्वालिफाई बाय पॉइंट्स, रन रेट में प्रॉब्लम हो जाएगा पाकिस्तान अंदर। आई थिंक 6 या 7 प्लेयर्स या 8 प्लेयर्स तो नो ब्रेनर है, राइट? वी नो, यू नो, हमारे रिजवान एंड बाबर एंड देन जो शादाब, नवाज, या And 3 pace bowlers up to Naseem, Rauf and Shaheen Afridi. Exactly. अब फिर बात आपकी उसी में आ जाती है कि यार शान जो है फिट है नहीं है, फखर उसके बाद में आएगा नहीं आएगा, एंड देन हैदर अली पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वसीम जूनियर को आप लाते हो कि नहीं लाते? अच्छा, या तो मेरा ख्याल है 2 या 3 ही इसमें से वो चेंजेस हो सकती हैं। शान और फखर का यू नो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। फखर का प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है, वो वार्म अप भी नहीं खेला है। तो शान इज ओके। शान में तो आप दे कैन बी मोर क्रिएटिव, अगर 10 ओवर निकल गए समहाउ, आउट नहीं हुए बाबर, रिजवान, मैं कहता हूँ अगर 8 ओवर भी निकल गए तो मत भेजें शान को, बेशक अगर जल्दी विकेट गिरती है पावर प्ले में देन ही शुड कम। तो ये दे कैन ट्राई दैट। दूसरी चेंज ये हो सकती है कि मोहम्मद ये आसिफ अली की जगह 4 सीमर खिला दें एटलीस्ट अगेंस्ट इंडिया। मोहम्मद वसीम जितने छक्के आसिफ अली मारता है उससे ज्यादा ही मारेगा, या 1-2 तो वो भी मार लेगा। आई थिंक दैट्स द चेंज आई रियली वांट टू सी, कि आसिफ अली को ड्रॉप करके मोहम्मद वसीम खेले इंडिया के खिलाफ। और हैदर अली तो मेरे ख्याल से ही विल बी, ही इज गोना प्ले। वो जो आई थिंक वो नंबर 5-6 पे ठीक है, वो इज पैची, तो दैट नंबर इज गुड फॉर हिम। अच्छा, ये जो आपने अभी कमेंट किया ना अबाउट वसीम जूनियर, अगर यही बात अगर आप करते एट द एंड ऑफ द इंग्लैंड सीरीज, तो आई थिंक आई वुड हैव डिसएग्रीड विद यू, बिकॉज़ वसीम हैड अ टेरिबल सीरीज, बट आई एग्री, लाइक जिस तरह उसने अपने आप को न्यूजीलैंड ट्रायंगुलर के अंदर किया है, आई थिंक डेथ बॉलिंग के अंदर remarkable Yorkers, remarkable control. So that has really, you know, it's opened up this question that should we be including him? Because उससे पहले तो एक straightforward था कि Rauf, Shaheen, Naseem, और our 3 pacers are covered. Yeah, but Wasim is making a case as an all-rounder as well, and as a fourth pacer. वसीम का प्रॉब्लम ये हुआ है कि जिस तरह हम लोग पहले कहते थे कि फहीम अशरफ को होना चाहिए था, तो वसीम कैन प्ले एज एन ऑलराउंडर। मैं कभी भी नहीं कह रहा कि वो ही शुड बी द फर्स्ट, लाइक ही शुड बी द मेन 3 पेसर। ही कैन बी he can really play as an all-rounder। 1-2 ओवर से करा के देख लें 15 ओवर के बाद, एंड वो उसका जो टैलेंट है बैटिंग का वो अनटैप्ड है, वो कभी उसको मौका नहीं मिलता। अभी वार्म अप में अगर किसी ने मिस किया, दे नीड टू वॉच कि उसने कितनी अच्छी बैटिंग की है। he can hit 360 pretty much। और प्लस ये है कि हमारे स्पिनर्स समटाइम्स दे हैव एन ऑफ डे। आई मीन दे हैव बीन मैचेस इन द रीसेंट पास्ट जब नवाज को बहुत मार पिटी है, उसमें थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है कि नवाज इज हैविंग एन ऑफ डे, और नवाज स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड जो हैं आपके बैट्समैन, जैसा मोइन अली था, या इवन न्यूजीलैंड ट्रायंगुलर में भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बड़ी आसानी से उसको मार रहे थे। तो मे बी उसके अंदर फिर आप नवाज को 1 या 2 ओवर कम करवा लो और उसकी जगह आप वसीम जूनियर को ट्राई कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट, अच्छा इन्होंने गलती की वार्म अप में, जब सैम करन आया है तो मैचअप नहीं फॉलो किया उन्होंने। सैम करन पे इफ्तिखार को लाना चाहिए था, उसने नवाज पे मैच ही खत्म कर दिया, उसने लेफ्ट किया। हालांकि इफ्तिखार हमेशा अच्छी बॉल कराता है, आई डोंट नो उस दिन क्यों नहीं दी बॉल। दे नीड टू पे अटेंशन टू मैचअप्स। आई लाइक दिस न्यू टर्म, तो ये मजेदार हो रही है मैचअप्स। तो आसिफ, आप भी एग्री करोगे कि ये not as much. I disagree a little bit because look, we have a track record of playing in Australia. What is our strength? Our strength is our bowling, generally speaking. Our weakness is batting. Our batting generally tends to be much more inconsistent on the bouncy seam wickets. So we know what our bowling is. We know how strong our bowling is in the sense that, you know, you have your 3 seamers that are reliable. TK Mohammad Wasim has bowled well at the death. He also bowls a lot of full tosses when he's trying for the Yorkers. He also bowls down the leg side. I'm not questioning how valuable he is, but my thing is, what is he going to provide you that our 3 top seamers
are not already giving us. And if I had to strengthen one thing, I would say let's strengthen our weakness, which is the batting. Now, Asif Ali is not much of a strength there based on his, how he's been playing recently. And Mohammad Wasim has great talent, but like Mudassir said, it's untapped. The other word I would use for that is unrealized. We have not seen it in the international cricket. He has not done it in an international match as of late. Whereas Asif, again, I hate to be sitting here being a proponent of Asif, but he did it in the last World Cup. He won 2 or 3 matches for us single-handedly. And he has that confidence going in. If we had to strengthen one part, I would strengthen the weaker part, which is our batting. And then, you say, okay, Tika Nawaz, maybe he's not having a good day. That's where Iftikhar comes in. And Iftikhar has shown that he can, between the 3 guys, Iftikhar, Shadab, and Nawaz, we can easily eke out 8 overs. But my thing is, you have, and look, if Shaheen, Naseem, and Rauf are not getting it done, I don't think Wasim is going to get the job done when those 3 cannot get it done. That's my thing. We have our 3 best guys. Wasim is excellent. He has a good future, but I want my strength to remain my strength, and let's bolster our weakness when we're going in an area where our batting has historically been uncertain. अच्छा, अगर आप वसीम को नहीं रखते तो फिर my question would be कि आपकी death bowling फिर आप Rauf is doing a remarkable job. Yeah, so Rauf has bowled very well in the 19th over. We've seen he's done very well lately. I think Naseem has not done poorly, and you even see in the final against New Zealand, Naseem did quite well. So the whole thing about Afridi is hard because Afridi is someone you use in the front. He takes wickets. Right. And he's been known to be a good death bowler, except for that one semi-final when Wade completely destroyed him. That was one bad day. I mean, and that too, there was a catch which was dropped also. So and we say, don't you remember back then, Saeed Ajmal was our top bowler as well. He had that one match against, again, Australia in another World Cup when he got clobbered, and then all of a sudden that reputation was gone. But you stick with what your strength is. I think Wasim would get rattled more easily against a top team like Australia, like England, than Afridi or Naseem would. It's hard to say because Naseem is not very experienced either, but I don't know. So if we're playing at the WACA, we're playing in Perth where it's a very bouncy wicket, or they're going to be very highly seaming conditions, then I'd say, okay, maybe I would justify that. But, if you're playing at the SCG, if you're playing at grounds that the ball will grip, then I don't know if I would be willing to lose the potential of what Asif can do for the potential of what Wasim can add to the 3 pacers we already have. नहीं, वो प्रॉब्लम ये कि ये तो ओल्ड स्कूल है ना कि एक बॉलर आया, वो 2 ओवर, वो सारी टीम कर रही है, पाकिस्तान का फॉल्ट नहीं है कि वो 2 ओवर शुरू में कराएगा और 2 ओवर एंड में आएगा. इंडिया का बेड़ा गर्क हुआ है. Bhuvi is one of the best bowler with a new ball. Yeah. वो why not let him bowl another 3rd over? उसको 2 ओवर बचा के सारे मैच करवाया उसने, ठीक है. तो हम भी वही कर रहे हैं. नसीम की जो लेंथ है ना वो ऊपर है, वो स्विंग नहीं होगी बॉल बाद में, और आई कैन सी अ बिग प्रॉब्लम. ये इसकी पिटाई होगी इन लोगों की. मेरे हिसाब से तो शाहीन की भी शाहीन कैन डू इट. शाहीन को ही कैन पुल इट बैक मे बी, मगर आई थिंक डेथ बॉलिंग इज अ बिग इशू. इट्स नॉट और आप मैच एक ओवर मैच हरवा सकता है, और आई डोंट नो, वी विल सी हाउ इट गोस. मगर मैं से भी कह रहा था कि आई डोंट नो, वसीम के I think he has a potential for death bowling. I don't know, man. Yes. He has done some good overs recently. I still will say for every good Yorker he bowls, he's still bowling a full toss, or he's still bowling down the leg side with fine leg in. And the thing about Rauf is he just doesn't bowl bad balls. The thing about Shaheen is he's consistent, and Naseem, one bad over, like you said, can ruin things. So I don't know. I mean, it's a plus minus either way. But I don't know that I'm willing to lose Asif and the potential of what Asif can do for that. मगर एक बात और देखें, पाकिस्तान की ना इंग्लैंड वाली टीम शेप हो रही है थोड़ी कि ये ऑल आउट नहीं हो रहा है. आपके पास रिजवान है, ही इज अ कीपर, वो ओपन कर रहा है. फिर शादाब और नवाज बेचारों को बैटिंग करनी पड़ रही है, ठीक है. एंड दैट दे गोना कीप प्लेइंग एट 4 और ऊपर ना, तो आपके बैटिंग बहुत ज्यादा हो गई है. तो अगर आप मुझसे पूछोगे, शान से फायदा यही है कि यू डोंट नीड के पास इफ्तिखार है, वो बाकी सारे हिटर पीछे ठीक है, और जो आसिफ को आप खिलाते हो 2-3 छक्के के लिए,
वो हाँ, और उतने वो मार सकते वसीम भी हैं। दे देगा पीछे, मेरा मतलब ये था। I mean, yeah, go I ahead. think both of you have made good points. मेरा पर्सनली थोड़ी सी इंक्लिनेशन मुदस्सिर के साथ है, just because Asif, I know last World Cup में he had an amazing game against Afghanistan. न्यूजीलैंड की गेम भी उसकी अच्छी थी, but off late, I mean, he's been so inconsistent. 1 out of 5 games he clicks. So I don't know if I'm sort of willing to bet on him. अगर वो चीज on a regular day उसने अगर बेसिकली अगर एक आधा छक्का ही मारना है, तो हो सकता है वो आपको वसीम भी दे दे। मुझे थोड़ा सा वो वसीम के साथ डेथ बॉलिंग के साथ मुझे थोड़ा सा इशू है। वसीम आप एक डेथ बॉलिंग एक प्रोवाइड कर देता है, बट I understand where Asif is coming from as well. और आसिफ का so I मसला है कि he hits in a V, वो मिड ऑन मिड ऑफ पे मारेगा और he will get out. इधर ऑस्ट्रेलिया में जो बैट्समैन स्क्वायर मारेंगे ना, वही बचेंगे और वही बाउंड्री होंगी। अगर आप चौके के लिए ठीक है, अगर आप कोशिश करके छक्का मारो तो फिर आपको 90 मीटर मारना पड़ेगा। तो ये भी which is where I think Rizwan would play a good, because Rizwan ज्यादातर आपके लेग साइड पे मारता है और स्क्वायर बाउंड्रीज पे मारता है, बट जो काउ कॉर्नर पे और उधर मारेंगे उसमें थोड़ा सा मसला हो सकता है। नसीम की बॉलिंग आई थिंक उसमें आप क्या कहेंगे? आई मीन ही वाज ऑब्वियसली एशिया कप उसका बहुत अच्छा हुआ था, बट उसके बाद he was unfit, he came back, he had a game or so. Do you think he's back in rhythm, or do you think उसके अंदर भी थोड़ा सा question mark है? And is there a potential of having Rauf, Shaheen and Wasim instead of Naseem? या कोई no brainer है कि जी we are going with Rauf, Shaheen and Naseem? It's a nice problem to have. We have a luxury of fast bowlers, and even Dhanani and Hasnain are good. But I think Naseem, two things about Naseem. One is he is a wicket-taking bowler at the front end. He takes, it's all about taking wickets, slowing down the rhythm. He is a wicket-taking bowler, so that's a big thing. And then what I found he is very good at towards the end is change of pace, slow balls, keeping the batsman out of rhythm. I thought he bowled pretty well at the death, even in the New Zealand matches. So, Wasim absolutely is someone to keep in mind, but I do think that Naseem at this point edges him out just because of and Wasim takes wickets as well. But Naseem, I think the sheer pace, ability to take wickets, accuracy, change of pace, things like that, it keeps the batsman guessing. This is all about throwing the timing off. That's how Haris Rauf is so successful. Right. He throws the timing off, 150, then 120, slow bouncer. The batsman's always guessing. And I think Naseem is learning that very well. Even after, Wasim, if it's coming as a Yorker or a low full toss, great batsmen will learn how to figure that out. Whereas with Naseem, he mixes it up a little bit more. So I would still go with Naseem, but I mean, it's a good problem to have. All right. अच्छा, थोड़ी सी बात अब एंड में in the interest of time, पाकिस्तान इंडिया की गेम के ऊपर कर लेते हैं। उसके ऊपर हमने ज्यादा बात नहीं की। अब इससे भी वेदर की कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिल रही। देयर इज अबाउट 80% चांस ऑफ रेन, और स्पेशली जो टाइम स्लॉट है हमारी गेम का, आई थिंक 7 PM to 10 PM या 7 to 11 PM ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के टाइम के हिसाब से, उसमें काफी देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। क्या आप कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय पर्सनल व्यू इज कि यार अगर तो होना है तो पूरा मैच हो, अगर रिड्यूस मैच हो गया तो दैट वुड प्रोबब्ली नॉट बी इन आवर इंटरेस्ट, बिकॉज एक तो ये है कि स्ट्रैटेजी पूरी चेंज हो जाती है। प्लेइंग अ 10 ओवर गेम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेइंग अ 20 ओवर गेम, और प्रोबब्ली इंडिया के पास पिंच हिटर ज्यादा है हमारे से, तो दे विल बी एट अ बिगर एडवांटेज। सो या तो पूरी गेम हो जाए या फिर एक एक पॉइंट मिल जाए। लेकिन let's for the sake of argument now assume के किसी भी तरह एक अनलाइकली सिनेरियो है, बट हो जाती है पूरी 20 ओवर गेम, तो क्या any changes you would make in the team versus the ones that we've been now familiar with, या वही टीम खिलाएंगे? और अगर खिलाएंगे तो उसमें कोई ऑर्डर वगैरह के अंदर कुछ चेंज वगैरह रेकमेंड करेंगे? I think पहले बात थोड़ी कर ही ली है इस पे कि चेंज नजर नहीं आ रही कोई। फखर अगर खेलता, मगर शान की बॉल लग गई है, तो फिटनेस प्रॉब्लम किसका ज्यादा बड़ा है, फखर का या शान का?
अगेन इंडिया दे कैन सरप्राइज, अगर वो आसिफ अली को, आसिफ भाई भी कह रहे हैं कि ड्रॉप नहीं करेंगे, तो बस वो वसीम वाली चेंज एक बन सकती है। मगर तो अगर शान अनफिट है तो फिर वसीम जूनियर को ले आए और शान को ड्रॉप कर दें। नहीं, क्योंकि शान अनफिट है तो शायद फखर आएगा ना फिर। लेकिन फखर का खुद अभी फिटनेस का पता नहीं है ना, उसने खेला भी कोई नहीं है, सो नहीं तो खुश दिल आएगा वैसे आई एग्री विद आसिफ भाई कि जो बॉलर है ना टॉप 3 वो नसीम और शाहीन और रऊफ है। नसीम जो पहला ओवर है ना, जब आप लोग भूल गए कि जब नसीम, ये शाहीन नहीं था, नसीम ही आउट कर रहा था पहले ओवर में। इसकी बहुत स्विंग होती है और वो पहला ओवर, मगर प्रॉब्लम नसीम का भी ये हो रहा है कि जब वो बाद में आ रहा है तो वो इम्पैक्ट लूज हो जाता है उसका। तो शुरू के जो पावर प्ले हैं वो तो ठीक है, आप यू कैन स्टार्ट विद शाहीन एंड, और हुआ भी यही, जब उसे मार लगी है तो फिर वो रऊफ को पहले ले आते हैं, विच इज फाइन टू। तो मेरा तो ख्याल अगेन आई विल परसिस्ट के किसी तरह वसीम के 1-2 ओवर और बैटिंग के लिए खिला लें, आसिफ अली को बिठा दें, बाकी तो आई थिंक इट्स फाइन। शाहीन की रिदम आपको ठीक लगी? फर्स्ट गेम जो उसका था, जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप, उसमें थोड़ी सी आई थिंक वो जरा स्लो भाग रहा था, बट जो दूसरी गेम थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिस तरीके से उसने LBW किया है और बॉल के इंजर कर दिया था उसको, अफगानी बैट्समैन को, तो उसमें आप क्या कह रहे हैं, क्या ख्याल है आपका कि इज बैक टू सॉर्ट ऑफ near his peak, या we shouldn't really expect big things from him, particularly for the India game? यस, स्पीड गन नहीं थी उस दिन, आई विश के स्पीड गन होती, मगर देखने में तो ठीक थी, बॉल मूव भी हो रही है, मगर फर्क तो पड़ता है। आई एम ग्लैड के उसको एटलीस्ट 2 गेम मिले, मगर ठीक है, अच्छा ही है। पहला ओवर तो अफगानिस्तान में तो बहुत ही अच्छा कराया। ठीक, India club, I would say कि जो है, I mean, I did not see Afridi, but we have our 11 set. If you have to choose between Fakhr and Shan, I would probably choose Shan, just because Fakhr, we don't know what kind of form he's in. We don't know, he has not had warm-up games. And so I don't think it's fair to put him in that position. And Shan, at least we know what we have. Let's not forget the Asia Cup ke match mein, that is the match where Nawaz was promoted, and we discovered, quote unquote, discovered him at number 4. So I definitely think that's something we need to keep doing, no matter what, whether we're batting first, batting second, large targets, small target, doesn't matter. Nawaz or Shadab has to come up top to maintain the pressure, maintain the scoring rate, because India ke khilaf, you have to keep pressure all the time. Their bowlers do get rattled. I think one big thing which we were lucky in Asia Cup and not now, Ashwin did not bowl in the Asia Cup, and he always gives us a hard time. So that's going to be a big key. If you wanted to talk about a key person, Ashwin is the person that I would be really worried about as a Pakistani batsman. Although जो Ashwin की जगह जो लाए थे Bishnoi, I think Bishnoi did a very good job as well. But he dropped the catch though, so नहीं, वो तो उसने अर्शदीप ने जो ड्रॉप किया था, but the leg spinner जो है, you're right, yeah, had a good game. अच्छा, एक चीज फाइनली इसको कंक्लूड कर लेते हैं. Historically, we've loved, over the past few years, we love chasing, right? Our script is try to get the opposition out for about 150, 160, or max 170, and then have a stable start with Rizwan and Babar. और बेशक रन रेट ऊपर भी चला जाता है, but we have enough depth कि हम थोड़ा escalate करके हम उसको manage कर लेते हैं. That script, I mean, UAE के लिए we saw कि almost all teams were trying to chase, Pakistan included. अभी की जो games हुई हैं उसके अंदर थोड़ा 50-50 लग रहा है. A lot of teams are deciding to bat first. आपका क्या ख्याल है कि अगर हम टॉस जीतते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, या ओवरऑल वर्ल्ड कप के गेम्स के अंदर उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे हम कि जी अगर टॉस जीते हैं तो चेज करें, या उसको आप गिवन कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैटिंग फर्स्ट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डिसएडवांटेज, पाकिस्तान को पहले बैटिंग को भी सोच लेना चाहिए? इसके बारे में कोई थॉट्स? यार, इंडिया वाले मैच में तो आई थिंक चेजिंग विल बी बेटर, क्योंकि वो उनकी बैटिंग अच्छी है, और अगर हमने उनको कम स्कोर दिया तो दे कैन प्ले रही है. कोहली विल स्कोर, वो उसका ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस भी है, और अगर वही इसका बाबर, रिजवान और ये सब एक ही तरह के प्लेयर हैं, अगर 160 170 उसे नजर आ गया ना तो वो ही कैन बी अ ट्रबल.
तो आई थिंक इंडिया को पहला खिलाना बेहतर है, और वो हो ही यही रहा है कि वो आ रहे हैं, वो अप्रोच एग्रेसिव है, वो 2-3 पाकिस्तान इंडिया में प्रेशर मैग्नीफाई होता है, वो 1-2 विकेट गिरती है पूरा मैच वहीं बैठ रहा है, और पाकिस्तान की अप्रोच सूट कर रही है कि ये बाबर रिजवान आते हैं, दे मेक श्योर कि विकेट नहीं गिरती, 4-5 ओवर बाद वो मैच इंडिया का फ्लैट हो जाएगा। वो उनके भी जो सीमर है ना, वो 1-2 ओवर बहुत अच्छे कराते हैं शुरू के 3-4 ओवर। तो आई थिंक जो हम जिस तरह हमने हराया एशिया कप में, वही अप्रोच, तो वही बेसिकली चेजिंग का ही आपको हुआ है उसके अंदर। I disagree with that. So अच्छा, generally, it was nice to see some disagreement. well, I mean, disagree you know, with my thing again is this: you want to finish your match, I think, with your strength, and our strength is our bowling, and we have shown, you know, even before the Asia Cup that we can defend. And so I would always say, put up what we can put up without the pressure of chasing, and then we know our bowlers are world class. Go in and defend, and you know, let our bowlers show their class and finish the match off. 2 exceptions I would say to that. Number 1, the India match, because of the rain. Because of the rain, you do not want to be batting first and not know how many overs you're going to get. You go in thinking you're getting 20 overs, you might get 7 or 8 overs. So batting second is a huge advantage in the India match, because you know, you cannot, that's a big thing. Dusri baat ye hai ki if it's a day, you know, we see the weather being what it is, if you have a lot of seaming conditions, if it's, you know, very cloudy outside, you know that the ball is going to be swinging every which way, then you take advantage of the conditions, and obviously you adapt accordingly, and then you bowl first. If that was not the case, if weather's not a problem, if it does not look like seaming conditions, I would bank on our strength, which is our bowling, and try to defend, and then see what happens. बट आसिफ, उसके अंदर इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे कि जब बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो उनको a lot of times इतनी कोई इम्पेटस नहीं होती कुछ, आई मीन दे डोंट हैव अ क्लैरिटी कि यार वी आर एइमिंग फॉर 180 और 105, उसके अंदर हम उसी 160 170 में ही फंसे हैं। एटलीस्ट जब हम चेस कर रहे होते हैं तो दे नो कि यार क्या रन रेट है, उसके अंदर दे ट्राई, दे माइट गेट आउट, बट ये आप नहीं देख रहे कि उसमें that could be a concern for us कि अगर हम बैटिंग करते हैं तो with Babar and Rizwan they take a bit of time and then we don't end up getting, you know, a match winning total. So the 2 things I'd say to counter that: A, like you said earlier, because we're playing a lot of the associate countries first, they know that there should be a sense of urgency immediately for the net run rate. Dusri baat ye hai ki I think the promotion of Shadab and Nawaz has changed that completely. You know, before they would get out, you know, when batting first, they'd get out and we'd go kind of slow with Shan, slow with Iftikhar. Having a pinch hitter come right after them more than makes up for that, I think. And so I'm okay with that. I just think our bowling is we have the best bowling attack. I think when they're on song, we have the best bowling attack in the world right now. So why not finish the match with your strength? And we know we can defend. We've been in tense matches with New Zealand. We've been in tense matches with England, very close matches that we had no business winning that we won. This is Haris Rauf's home ground, Melbourne. Right. So the conditions, and I would finish with our strength. But I see your point. I know it makes sense. Yeah, मगर एक चीज देखें आप कि अभी जो दोनों मैच इंडिया को हराए वाइट बॉल में वर्ल्ड कप में, पता नहीं कितने साल बाद, 10-15 साल बाद, दोनों चेजिंग में हराए, चेजिंग में हुए हैं। और आई थिंक एज अ फॉर्मेट ना T20 में चेजिंग टीम को फायदा होता है, क्योंकि पहले बैटिंग में यू डोंट नो कि पिच कैसी है, इज इट अ 160 पिच, 200 पिच. The only team who is playing same in every game is England. उनको पहले खिला तो वो तो 200 ही कर देते हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. इंग्लैंड, सारी टीमें परेशान है इंग्लैंड से कि हाउ टू रिस्ट्रिक्ट देम, दे आर जस्ट प्लेइंग टू एग्रेसिव. मगर ओवरऑल आई थिंक जो T20 की जो एवोल्यूशन है ना, उसमें बैटिंग सेकंड को एडवांटेज है, कोई भी पिच हो, कोई भी कंडीशन. So the devil's advocate to that would be to say, okay, the bowlers also don't know what kind of pitch it is when they're bowling first. Whereas if they get an idea, to guess how it is seeming, and you know, especially in a night match, they know it'll seem more at night. They may be able to assess the situation better. And being the best bowlers in the world, we think, would be able to really press our advantage. But I'm happy either way. Yeah, but एक चीज मैं उसमें सिर्फ ऐड करूंगा कि इतना big of a disadvantage or advantage as compared to UAE probably नहीं होगा. UAE में with the dew factor and all, it was a big advantage chasing. यहाँ पे we shouldn't feel bad either way. अगर हमें batting first भी करने opposition कर देती है टॉस जीत के, तो I mean
इतना सारा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट डेफिनेटली हमें थोड़ी अप्रोच ज्यादा एग्रेसिव करनी पड़ेगी. वी विल हैव टू प्रमोट मुझे लगता है नवाज हमें एंड फर्क शहनाज. पड़ता है यार, क्योंकि हम लोग कभी भी ना 200 के टारगेट से खेलेंगे ही नहीं. बैटिंग फर्स्ट करेगा ना पाकिस्तान, तो 180 भी बहुत तीर मारा. 180 मेंटल से मेंटल ब्लॉक ना, क्योंकि जो शुरू इस तरह करते हैं हम लोग, तो ये डिसएडवांटेज है पाकिस्तान को. इंग्लैंड आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, वो शायद दे विल गो फॉर 190. इवन इंडिया भी चला जाएगा. पाकिस्तान को फायदा यही है कि अगर चलो वो अलग बात है कि बॉलिंग इतनी अच्छी है कि शायद 160 भी डिफेंड कर लें, क्योंकि हो ये रहा अभी तक, स्पेशली इन पिचेस पे, क्योंकि इन पिचेस पे विद अ लॉन्ग बाउंड्री छक्के इतने लग नहीं रहे, तो 160 could be a defendable target. Yeah, it is right now. Yeah. चलें जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स. वी होप कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, और he is wishing Pakistan the best of luck for the campaign. Of course, we'll be rooting for them. Really excited. Let's see how this World Cup unfolds. कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप कंटिन्यू हो, आपके साथ अपना राब्ता कंटिन्यू रखें. तो इसी के साथ he is wishing Pakistan the very best. पाकिस्तान जिंदाबाद.